Hi friends, in this session we'll start with the chemical reactions of diazonium salt. In first session we'll discuss about how we can prepare a NH2 containing component. Second session we'll discuss about the chemical properties of NH2 containing species. This is chemical reactions of diazonium salt. Now diazonium salt is nothing but BDC, benzene diazonium chloride salt. Hope you remember this. How can we prepare this BDC? When aniline is treated with NaNO2 in axial 0 to 5 degrees Celsius temperature, we get benzene diazonium chloride salt, that is BDC. Now we have to check the chemical reactions of BDC. So let's start with this one by one. First chemical reaction, that is here in case, first black arrow shows Sandmeyer reaction. So first, when BDC is treated with Cu2Cl2HCl, you get chlorobenzene. Cu2Br2 plus HBr, you get bromobenzene, and CuCnKCl, you get cyanobenzene. Fine. So this is when BDC is treated with Cu2Cl2HCl, you get chlorobenzene, Cu2Br2HBr, you get bromobenzene, and CuCnKCl, you get cyanobenzene. So after few years, one more scientist came, that is called Getterman. Now Getterman prepared the same two, that is chloro and bromobenzene, but reagents are changed. That is, in the presence of copper powder HCl, get chlorobenzene, copper powder HBr, you get bromobenzene. So this reaction, when BDC is treated with Cu powder HCl, you get chlorobenzene, and when BDC is treated with copper powder HBr, you get bromobenzene. This is entitled as Getterman reaction. तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शन चेक किए. सबसे पहले जो टिक किए हुए हैं दैट इज एंटाइटल्ड एज सैंडमेयर सिंथेसिस, एंड जो रेड पेन से क्रॉस किया हुआ है दैट इज गेटरमान सिंथेसिस. Getterman is a huge failure to production of chloro and bromobenzene, so that's why it is not very well known. So nowadays also each and every industry follow Sandmeyer synthesis. Next, when BDC is treated with Ki, you get your iodobenzene. This is also we did in haloalkane and haloarine. How can we get iodobenzene? Next, when BDC is treated with H3PO2 plus H2O, you get benzene. और अगर आप इथेनॉल के साथ भी रिएक्शन करोगे देन आफ्टर यू गेट द बेंजीन. मींस आइदर ये दो में से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हो. इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2 H2O you get benzene, or in the presence of ethanol you get your benzene. Next, when BDC is treated with H2O, you get phenol. So when BDC in the presence of hot vapor pass करोगे, you get your phenol. Next, when BDC is treated with HBF, this we already did in haloalkane haloarine. This reaction is known as Bal-Schiemann reaction. Only one preparation to get fluorobenzene. This is the reaction. Means BDC is treated with HBF4, so you get N2 plus BF4 minus. This is one of the intermediate. Then when you simple hit this component, यहाँ से BF3 and N2, you operate in the atmosphere and F comes to this parent position, you get your fluorobenzene. Once again, when N2 plus BF4 minus hit it, means N2 यहाँ से निकल जाएगा, BF3 यहाँ से निकल जाएगा, and एक F यहाँ पे introduce हो जाएगा, you get fluorobenzene. Now the same species when presence of NaNO2 copper powder. So when NaNO2 copper powder, when you hit this component, this converted into nitrobenzene. So यही एक intermediate को अगर आप hit करोगे, you get fluorobenzene, and the same species को अगर आप NaNO2 and copper powder के साथ treat करोगे, you get nitrobenzene. So many a time reaction asks convert aniline to nitrobenzene. So there are two ways to prepare aniline to nitrobenzene. एक aniline से आप सबसे पहले बना लीजिए BDC. Once you prepare BDC, then you undergo H3PO2 H2, you get benzene, and benzene का electrophilic substitution you can prepare nitrobenzene. और second process है first prepare aniline to BDC. BDC में से बना लीजिए N2 plus BF4 minus, and then NaNO2 copper powder, you get nitrobenzene. So ये conversion में बहुत काम आएगा. Once again a quick recap of this chemical reactions of diazonium salt. So first of all, BDC, when BDC is treated with Cu2Cl2HCl, chlorobenzene, Cu2Br2HBr, you get bromobenzene, CuCnKCl, you get cyanobenzene.
These three reactions are entitled as Sandmeyer synthesis. Then you have a copper powder HCl and copper powder HBr. अगर copper powder HCl के साथ reaction करोगे chlorobenzene, copper powder HBr के साथ reaction करोगे तो bromobenzene. These two reactions are entitled as Gattermann synthesis. Next, when you treat with Ki, you get your iodobenzene. When BDC is treated with H3PO2 plus H2O, you get benzene. और आप इथेनॉल के साथ भी रिएक्शन करोगे, then after you get your benzene. Either ये दो में से कोई भी एक reagent यूज कर सकते हो. Next we have a H2O. hot vapor पास कीजिए BDC के ऊपर, so you get phenol. When HBF4 के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो you get N2 plus BF4 minus. When this species hit, you get fluorobenzene, and the same intermediate when you treat with NaNO2 and copper powder, you get nitrobenzene. So these are the chemical applications for diazonium salts. So another application, ये BDC कहाँ पे यूज हो सकता है? तो आप जितने भी डाइज देख रहे हो, beautiful colors, that is entitled as a coupling reaction. Different types of डाइज होती है, ऐसा नहीं है कि खाली इसी प्रोसेस से आप डाई बना सकते हो, but this is the one of the process. मीन्स कपलिंग रिएक्शन के अंदर फर्स्ट हमारा रिएक्टेंट होगा एक BDC, that is N double bond NCl, और दूसरा होगा कपलर जो BDC के साथ कपल्ड करेगा. So that's why this reaction is entitled as a coupling reaction. So when BDC is treated with phenol, phenol के पैरा पोजीशन से H और यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा. Once again, BDC कैसे बना सकते हो? Aniline in the presence of NaNO2 and HCl, 0 to 5 degrees Celsius temperature, you get BDC. Now when BDC is treated with phenol, phenol के पैरा पोजीशन से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl HCl निकल गया, you get benzene ring, N double bond N, and then there is a phenol. This is orange color dye. Name is para-hydroxyazobenzene. Name is orange dye. Next, when BDC is treated with aniline, once again aniline के पैरा पोजीशन से H, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा. What is left in this side? Benzene, N double bond N, and H2, that is para-aminoazobenzene. This is yellow color dye. बोर्ड में भी ये क्वेश्चन एक या दो बार पूछा हुआ है. डायरेक्टली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन, और हाउ कैन वी प्रिपेयर ऑरेंज एंड येलो डाई बाय यूजिंग BDC. So this is all about one more name reaction, that is coupling reaction. So after completion of this BDC reaction, now we'll move on to this some miscellaneous reaction. Dear, these reactions are not available in your textbook, but many a times in various examination like SRM, बिट्स पिलानी एंड VIT एंड बहुत सारे और भी कॉम्पिटेटिव में कहीं ना कहीं ये आपको हेल्पफुल होगा. सो दिस मिसलेनियस रिएक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देख लीजिएगा. फर्स्ट इज टिनल रिएजेंट. नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl के साथ ट्रीटमेंट करना है. सो व्हेन प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विथ NOCl, वी गेट RCl plus N2 plus H2O. फाइन. सो बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है? H2 फ्रॉम हियर, O फ्रॉम हियर, H2 निकल गया, ये N and ये N, N2 इवोपरेट हो गया एंड द Cl इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम. सो CH3NH2 NOCl के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ये अमाइन कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड के अंदर. अगर NH2 में से Cl बनाना है तो दिस इज वन स्टेप प्रिपरेशन, दैट इज नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl के साथ ट्रीटमेंट करवा लो. दूसरा है फॉस्जीन. फॉस्जीन हमने कहाँ देखा था? याद आ रहा है? Chloroform capped open, it's converted into phosgene. Yes, वही रिएक्शन यहाँ पे करना है अमाइन के साथ. When RNH2 in the presence of COCl2, primary amine when treated with phosgene, it's converted to RN double bond C double bond O to HCl. So primary amine when treated with phosgene, you get alkyl isocyanide. और alkyl isocyanide के यूज करते हुए हमने बहुत सारे नेम रिएक्शन देखे, जैसे स्मिट्स रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस. सब पी के अंदर इंटरमीडिएट यही बन रहा था, alkyl isocyanide. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट. नेक्स्ट इज स्किफ बेस्ड टेस्ट. ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर प्राइमरी अमाइन को डिटरमाइन करने के लिए और एल्डिहाइड को डिटरमाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो. अगर आपको प्राइमरी अमाइन एज अननोन दिया हुआ है, आप एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा लीजिए. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इज नीडेड. फाइन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H+, ये H+ कहां से आएगा? H2SO4 में से. सो O फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर, H2O यहां से निकल जाएगा एंड व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड? R CH डबल बॉन्ड N एंड R. यहां से H2 चला गया, यहां से O, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज. दिस इज एंटाइटल्ड एज सिफ बेस.
CH3NH2 plus CH3CHO, once again NH2 में से H2 और यहाँ से OH2O चला गया, you get CH3NH double bond CH single bond this. This is all about your Skiff reagent. So Skiff base having a typical yellow color nature. So केमिस्ट्री लैब में अगर आपको प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है एज अ नोन अल्डिहाइड, जो आपका नोन होगा बेंजाल्डिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड, उसके साथ ट्रीट करोगे, यू गेट व्हाइट सॉलिड येलोइश कलर कंपोनेंट दैट इज एंटेड एज अ Skiff base. नेक्स्ट रिएक्शन इज मैनिश रिएक्शन. मैनिश रिएक्शन मैनिश बेस होता है, वो बनाने के लिए यूज होता है. वंस अगेन वी स्टार्ट विद द प्राइमरी अमाइन. इसका रिएक्शन किया हुआ है फॉर्माल्डिहाइड के साथ, and this is acetophenone C6H5COCH3. once again reagent देख लेते कौन कौन से. first is primary amine, second is formaldehyde and third is acetophenone. so यहाँ से simple H2O water molecule release होगा. कहाँ से release होगा? 1H from NH2, O from aldehyde and H from here. once again H from NH2, O from aldehyde and H from acetophenone. बस अब कुछ नहीं करना है, सबको इकट्ठा करके लिख लेना है. So we'll start with R CH2, एक H निकल चुका है, what is left? NH. Then एक O निकल चुका है, what is left? CH2. एक H निकल चुका है, what is left? CH2 CO C6H5. This is entitled as Manish base. This is one more name reaction, that is Manish reaction. जैसे दोस्तों हमने हिंसबर्ग रिएजेंट चेक किया था, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसा ही एक और टेस्ट है, दैट इज होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. दिस इज प्राइमरी अमाइन. व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज CS2. तो फर्स्ट स्टेप यू गेट R NH C डबल बॉन्ड S SH. यहां से एक H चला गया हुआ टर्मिनल के साथ, सो यू गेट R NH C डबल बॉन्ड S SH. देन HgCl2 के साथ ट्रीटमेंट करवा लीजिए. जैसे ही HgCl2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे हम, Hg फ्रॉम हियर एंड S फ्रॉम हियर एंड Cl फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर, HCl is released. What is left in this side? So R as it is, N, ये H और ये H Cl2 के साथ चला गया, 2HCl is released, and ये S Hg के साथ चला गया, HgS is released. You get R N double bond C double bond S. This is nothing but alkyl isothiocyanate. अगर O होता है तो अल्काइल आइसोसाइनेट लिखते हैं हम, यहाँ पे S है इसीलिए हम थायोसाइनेट लिखते हैं. सो सेकेंडरी अमाइन अगर होगा, इफ आई हैव सेकेंडरी अमाइन, देन RNHR कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीटमेंट करवा लीजिए, तो फर्स्ट स्टेप बनेगा. बट सेकेंड स्टेप नहीं प्रोसीड होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक H है, बट नाइट्रोजन के पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इज अवेलेबल, एंड ड्यू टू दिस सेकेंड स्टेप कैन नॉट बी प्रोसीड. ऊपर के रिएक्शन के अंदर सेकंड स्टेप हुआ, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अल्फा हाइड्रोजन था, बट हियर इन केस दिस नाइट्रोजन डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू दिस सेकेंडरी कैन नॉट अंडरगोस दिस रिएक्शन. नाउ टर्शरी की बात करते हैं. RNNN RNR CS2. अब फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन, सो नो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल इन नाइट्रोजन. So this is once again distinguished for primary, secondary and tertiary amine. Next कुछ miscellaneous reaction है अमाइन बनाने के लिए, that is aniline बनाने के लिए. अगर फिनॉल का अमोनोलिसिस करेंगे in the presence of ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, so directly NH2 स्पीशीज आ जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा. Then miscellaneous reaction एक और, 2 moles of chlorobenzene when treated with ammonia in the presence of cuprous oxide. You get 2 moles of aniline, CuCl and H2O is released. And last, when benzene is treated with NH2OH in the presence of FeCl3, you get aniline. So these are the few miscellaneous reaction to prepare aniline from the various composition. So in this session we'll discuss BDC के chemical reaction and कुछ miscellaneous reaction जो competitive में काम आते हैं. So this is all about it today's session. Thank you.